गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ENGDC 203 nowadays we are going through जूठन और शायद ये आज आपका कंक्लूडिंग लेक्चर ही मुझे लग रहा है बिकॉज वी आर लेफ्ट विद द फ्यू पेजेस ऑफ द सेम। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक, जितना हमने किया है वो किस चीज़ से डील करता है, दैट डील्स विद द संघर्ष ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि। किस समाज में उन्होंने किस तरह संघर्ष किया, उनके पेरेंट्स ने कैसे संघर्ष किया, उनके भाई भाभी ने उनके एजुकेशन के लिए किया, उनके समाज में जो उनके जो फ्रेंड्स थे वो बिलोंग्ड टू वेरियस कास्ट्स एंड कम्युनिटीज़, उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि की डेवलपमेंट या ग्रोथ में कैसे हेल्प की। समाज में ऐसे लोग भी थे हु मेड हिम रियलाइज दैट यू आर एन इन्फीरियर बीइंग। हर तरह के लोग हमें भी तो मिलते हैं ना समाज में। सम ऑफ देम दे विल मेक अस फील गुड, सम ऑफ देम दे विल मेक अस फील कि आपका वजूद कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं आता। दैट टाइप ऑफ फील इज़ गिवन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल इन डिफरेंट वेज। सो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो संघर्ष है वो पहले एजुकेशन के लिए संघर्ष किया, फिर जॉब के लिए, फिर दूसरी जॉब के लिए उन्होंने जो ट्रेनिंग थी 2.5 years की, ड्यूरिंग दैट फेज ही गॉट मैरिड ऑल्सो। ही केम टू द प्लेस वेयर ही वॉज अपॉइंटेड, और मुंबई में आके वो लोग उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, अपनी वाइफ के साथ वो रहने लगे। एंड देन व्हाट हैपेंड दैट इन बिटवीन क्या था, जो महाराष्ट्र में जो एक दलित मूवमेंट चल रहा था वो मैंने आपको फर्स्ट ईयर में डिटेल में पढ़ाया है किस तरह से शुरू हुआ था। लोग धीरे धीरे कलेक्टिव होने शुरू हुए, लोगों ने एजुकेशन को बढ़ाया। जब एजुकेशन से अवेयरनेस आई तो पीपल दे बिकेम अवेयर ऑफ देयर राइट्स ऑल्सो। जब राइट्स की अवेयरनेस आई उन्होंने क्या कहा कि अब हमें वो अधिकार चाहिए व्हाट्सएवर इज रिटन देयर कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखे गए हैं। और मेन फोर्स बिहाइंड ऑल दिस वॉज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑथर ने सबसे पहले गीता, भागवत गीता और भीमराव अंबेडकर की जो बुक्स थी उनको रीड किया, उनके बारे में पढ़ा। फिर अलग अलग देशों की अलग अलग डेवलपमेंट से रिलेटेड कंट्रीज़ की जो बुक्स थी उनको उन्होंने रीड किया। फिर वेरियस टाइप्स ऑफ नॉवेल्स पढ़े, लिटरेचर पढ़ा, पोइट्री पढ़ी और अपने आप को एनरिच किया, अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस लाए। तो ये वो फेज़ था। अगर वो चाहते तो वो टूट भी सकते थे कि नहीं मैं इस तरह के माहौल में सर्वाइव नहीं कर सकता, या मेरे लिए इट्स रियली वेरी टफ, लाइकली टू बी इम्पॉसिबल है। लेकिन व्हाट डिड ही डू, ही मूव्ड अगेंस्ट ईच एंड एवरीथिंग। वो हर उस चीज़ के अगेंस्ट गए जो उनके रास्ते में बाधा थी, उन चीज़ों को उन्होंने फेस किया। एंड ही मूव्ड अहेड एंड अल्टीमेटली ही मैरिड द गर्ल ऑफ हिज चॉइस। ही ब्रॉट हर विद हिम टू द प्लेस वेयर ही लिव्ड। मकान नहीं मिल रहा था तो अपने फ्रेंड के घर में रहे, वहाँ दोनों उनके फ्रेंड की भी शादी होगी तो 2 रूम्स थे, उन्होंने 1 रूम शेयर किया। उसके बाद फिर जब अकोमोडेशन मिल गई, इंडिपेंडेंट रहना शुरू किया। जब इंडिपेंडेंट रहने लगे तो जॉब के साथ उन्होंने एक और संघर्ष शुरू किया, वो था समानता का संघर्ष, जातिवाद को ख़त्म करने का संघर्ष। वहाँ पे भी तरह तरह के लोगों ने उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट की, लेकिन ही वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड श्योर ऑफ द थिंग कि बदलाव तो आएगा ही आएगा। और मोटिवेशन कहाँ से मिलती रही, वो लिटरेचर से मिलती रही कि अगर आप कोशिश करोगे तो कभी चेंजेस ना हो, ऐसा होता ही नहीं है। आपकी कोशिशें जो है वो रिजल्ट ज़रूर लेके आती हैं। सो अल्टीमेटली ही केम टू नो दैट हिज मदर वॉज एलिंग एट होम। तो वो गांव वापस आ गए एंड दे स्टेड देयर फॉर अ वीक। नाउ मदर वॉज इम्प्रूविंग, बट व्हेन दे केम बैक टू चंद्रपुर his mother expired and he received that very news after 2 months। क्योंकि आपको पता है पहले लेटर चलते थे बड़े आराम से, है ना। एंड his brother Sukhveer son wrote a letter, but वो एक पोस्ट कार्ड डाला था, but it couldn't reach him well in time. After his mother's death his father fell ill, and when he went to the village to see his father also expired. फाइन विलेज वाला चैप्टर लाइकली टू बी क्लोज हो गया उनकी लाइफ में। देन ही टॉक्स अबाउट अमरावती डिस्ट्रिक्ट वेयर एक हिस्टोरिकल इवेंट भी है। वहाँ पे देर इज़ अ प्लेस कॉल्ड मलकपुर, एंड अ टीचर asked a 7th class student to burn a Marathi textbook where a page dealt with Dr. Ambedkar। उसको वो क्या कहा कि you'll have to just tear the page and throw it out. Some of the students they didn't like, so it became talk of the town. And when it became a talk of the town, people started rising their voice. क्यों? क्योंकि ये चीज़ गलत थी। देयर वॉज अ चैप्टर डीलिंग विद अ पर्टिकुलर पर्सन, और उसको टेयर ऑफ करके जो फाड़ के वो फेंका गया था। नाउ एट टाइम्स जो अपर कास्ट पीपल थे दे पेल्टेड स्टोन्स ऑन दलित्स, और उनको काफ़ी परेशानी भी क्रिएट की। एंड इवन द ऑफिशियल्स डिडंट सपोर्ट दलित्स, वो भी अपर कास्ट वालों के इन्फ्लुएंस में थे। बट
Now what did the author do? He started spending his time in Dalit areas. वहाँ पे लोगों को अवेयर करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए जो ऑथर ने वो टाइम निकालना शुरू कर दिया. देयर वॉज अ विलेज सुमठाना near ordnance factory, and there were large number of programs which were arranged by these Dalit organizations, and in these through these programs Om Prakash Valmiki emerged as a very good speaker. He talked to the people, and different people related to Dalit literature were there. I'll let you know the name of the Bhim Sen Dete was there, Loknath Yashwant, Bhagwan Thak, Shri Gangadhar Pantavne were there. So all of them, they were. Then Pantavne was the person who translated the poetry written by Om Prakash Valmiki into Marathi में उन्होंने उसको translate किया. Then he met Qureshi. Qureshi met the author in a पोइट्री रेसिटेशन का कंपटीशन था वहाँ पे, एंड ही वाज अ सब इंस्पेक्टर इन महाराष्ट्र पुलिस. ही वाज अमेजिंगली गुड फॉन्ड ऑफ लिटरेचर, एंड ही वाज वर्किंग देयर इन द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एज अ head of the particular unit of police. So they became very good friends, and he Qureshi didn't trust anyone, so he left his wife with Chanda, and they became very good friends, and they had two sons, Ram and Sham. They were named, or Qureshi felt good, so they had very good understanding. So near Qureshi there was ADC, a commandant got transferred, and he came, and Qureshi felt that let us go and meet that very person who commandant से मिलते हैं. But author was not interested, because he felt that whenever he'll come to know about my caste, he won't feel good. Then he said, they won't refer to your caste, and he just keep quiet one thing. And these people who are associated with the army, they hardly bother about caste and creed and all that. But same thing happened when he referred to the thing that I belong to a particular village in UP. Then he was asked about the caste. When the author replied accordingly, he told him about the caste of his own. Then everything was just, it stopped. सारी चीज़ें जैसे पॉज होगी. चंद्रपुर was a backward area of Maharashtra, and industrial revolution, it reached there. When industrial revolution reached there, धीरे धीरे industries started growing up there. In that very area, dacoits appeared, and people, they started looting each other, and people involvement of the police, it increased. So his wife Chanda had been to Dehradun. He was alone at 10 at night. A police jeep stopped there. Qureshi came out, and Inspector Verma was there, and he said that just come with me. Qureshi was there, so he went, but he was really very scared of the things. So jeep stopped at a place. So policemen scattered here and there. There was a truck which was coming from Andhra Pradesh with red chilies. They told that very person to stop, and they wanted him to throw the each and everything whatsoever was in truck, but that very truck driver offered them money, so everything got settled. So same thing was being repeated again and again. Round about 8 to 10 trucks they crossed from there. काफ़ी अच्छा पैसा बनाया पुलिस वालों ने. At 12:30 at night they reached Vani, where local fair was going on. The jeep stopped, and all the policemen, they scattered here and there. When Qureshi and Verma, they started taking tea, and when the author asked them, they said that they had been to the prostitutes. तो इससे हमें पता लगता है कि डिग्रेडेशन किस तरह की हमारी समाज में है और किस तरह के लोग जो हैं ज़िंदगी जीते हैं. At round about 2 o'clock, those people, they started moving towards their destination, and the author, he was feeling uncomfortable. In the morning he reached his destination, अपने घर पहुंच गया. In the morning he left his bed and opened the paper, and there he read a news. It dealt with the dacoity in a village. अब उसको समझ में आ चुका था कि वो डाकू कौन थे और कौन उनको गांव वालों को लूट रहे थे. So Belarpur paper mills, they arranged a drama competition every year, and Meghdoot drama company
ठीक है। इट हैड प्रेजेंटेड, कहाँ किससे एसोसिएटेड है, ये ऑथर से एसोसिएटेड है। आधे अधूरे हिमालय की छाया, सिंहासन खाली है, पैसा बोलता है। ऑल दीज प्लेस दे वर परफॉर्म्ड एंड ही वॉज गिवन prize for best actor, best director, best author, all were there. Then we come to know about Dr. Hanumant Naidu, who was associated with Ordnance Factory, and he met him during a पोइट्री रेसिटेशन कॉम्पिटिशन, एक कवि सम्मेलन में उनकी मुलाकात हुई. सो ही वॉज अ रियल टॉर्च बेरर फॉर द ऑथर. जहाँ ऑथर गलत होता था ना, वो हमेशा हनुमंत नायडू उनको बताते थे. एंड on June 22nd 1895 he got transferred from that very place to Dehradun. Both of them, they didn't feel good, he and his wife, they wanted to be there. लेकिन then we are told about Dalit poet Loknath यशवंत. He really loved the surname of ओम प्रकाश वाल्मीकि. देखो हर चीज़, हर इंसान की अपनी रिसेप्शन होती है. कुछ लोगों को लगता है कि ठीक है, whatsoever is there it is true, और वो बात दिख रही है. लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि what is the need of revealing your caste और creed, ज़रूरत नहीं है. तो हर इंसान की अपनी रिसेप्शन है. यू कांट से कोई सही है कोई गलत है. एंड देयर वर लार्ज नंबर ऑफ friends who felt like name was too good. And when he applied for a competitive exam, so he filled up that very application जो थी in front of Mr. Gupta. He was well familiar with the name Valmiki. When he saw his application, he talked to him in a very awkward tone. He referred to his caste and he said that you'll let me know how to talk. When the author objected, then he said that you'll let me know, or you'll teach me how to talk to you. At that time, author's friends, they cooled him down and said that don't object right now, don't say even a single word, because they want to kick you out and they'll find a chance for the same. He just kept quiet. Then we come to know about Mohandas Namishirai. He was a poet, writer and a journalist. He lived in Arya Nagar, Delhi, and at that time whenever the author went there, he stayed there. Then at that time Chanda was being treated at your AIIMS, and they had to come from Chandrapur, Maharashtra. So his Shakuntala, who was the wife of Mohandas Namishirai, she helped them a lot. And one day Namishirai took him to the place where one of his friend lived. He was an editor, and while they were going upstairs, Namishirai said that I'll refer to you as Om Prakash only, just leave Valmiki. But this was not a solution, because author knew well कि जिस दिन पता लगेगा उस दिन problems create होनी है. So he was associated with large number of people who were creators of various creations of theirs were in circulation. They were very learned people, and they were associated with different organizations, and they were scared of one thing, that if we hide something, then it doesn't make us feel comfortable. Then there was a niece of the author. Her name was Seema. She was doing graduation. Then Dr. Kusum Chaturvedi, she was the head of the department. Hindi department की head थी वो. One day while the author was talking to him, she said that very girl Seema is my niece. When she asked, when that very lady asked Seema, she outrightly said, no, I don't know who is he, मुझे पता नहीं है. When she was asked at home, then she said that how can I say that you are my uncle? If I'll say I'll be in trouble, my friends won't be with me. So it is wrong to talk about your caste ever. And when the author reached Chandrapur, from Chandrapur to Dehradun, again there was a problem related to accommodation. Whenever the landlord listened to his name, they came to know about his caste, they just made excuses. ये तो आपको पता ही है, ये in general जो है वो इस तरह का सोच रखा जाता था पहले. So he is telling us about Sardar Gyan Singh. He knew the author because of his writing, and he was influenced the way author wrote. He ever praised him, and he said that your name Valmiki is of no use, just give it up. And why are you feeling trapped? Why do you trap yourself because of this very name? He said that but some of the
people like Dr. Dharamveer, आपने सुना होगा डॉक्टर धर्मवीर के बारे में. He said that don't leave this name, you are acknowledged because of your surname only. One day the author and his wife Chanda, they had been to Rajasthan and were coming back to Maharashtra from Jaipur. They got a seat where there was a very cool family was sitting, a very we must say that civilized type of people. They looked, husband, wife and two children were there. They were talking with each other and they started talking to Chanda and Om Prakash Valmiki also. Everything was being discussed and suddenly they asked that whether you belong to Bengal. Then Chanda said no, we are from Uttar Pradesh. Then they asked about the caste and the author didn't feel comfortable and suddenly he replied like, he said that I belong to the caste which sweeps or which keeps the towns clean. A particular word को उन्होंने refer किया and everything was like changed. There was pin drop silence. So this this type of silence, it revealed that your qualification, your qualities, each and everything depends on the thing, the way you move ahead in the society, the way you qualify, the way you polish yourself. These things, they become insignificant somewhere. And if you have to be successful, if one has to be successful, what do we need to do? We need to polish our skills, our qualities, and only then we can just move ahead. And सेकेंड थिंग इज मेड क्लियर दैट इस ऑटोबायोग्राफी में जो ऑथर ने फील किया है कि इफ़ यू आर अ दलित, इफ़ वन इज़ अ दलित, इवन डिस्पाइट क्वालिफिकेशन, डिस्पाइट क्वालिटीज़, डिस्पाइट मैनर्स, एटिकेट्स, ईच एंड एवरीथिंग व्हाटसोएवर सोसाइटी वांट्स फ्रॉम यू, यू विल बी टैग्ड विद दैट वेरी नेम. उस चीज़ के साथ आपको टैग किया जाता है. एंड दे एक्सपेक्ट दैट अ दलित और अ दलित पर्सन शुड बी एट देयर डिस्पोजल फॉर एवर. समाज यही सोचता है कि आज भी इस तरह का जो एटीट्यूड वो चलता रहना चाहिए. एंड दे वोंट बी अलाउड टू बी अ पार्ट ऑफ सिविलाइज सोसाइटी, जिस चीज़ के लिए वो लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं. सर दिस वॉज all about your novel which dealt with which actually is autobiography of ओम प्रकाश वाल्मीकि. इसमें से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे. लेट मी टेल यू द क्वेश्चंस. Describe briefly about the writer and his family. You know well what type of family was there, which type of life they lived. So then okay, we'll discuss this in next lecture. Good day.